Good morning, all. Welcome to our KWAC conversation. This is our third episode, which is related to business growth and expansion. And the whole purpose to start this KWAC conversation to bring our community people, which is having vast experience in their field, onto a single platform. So our people and our community can take the benefit from their experience. My name is Shyam Singh Badoria. I am working in IT and I am a member of KWAC. And my today co-host is Shivani Ranaji. So this session is going to be very helpful, very beneficial for those guys who are thinking to start new business and want to take their business next level. And today our esteemed speaker, Mr. Kamal Singh Tomarji, he is a seasoned business professional having extensive experience in sales and business development. And he also having good background in client relationship building, team management, and business strategy planning. So thank you, Kamalji, taking out time of your busy schedule. We really appreciate your time. And we have some question which is asked by our audience in advance. So we'll try to resolve those questions in this session. Thank you, Kamalji. Over to you. Thanks a lot, Shyamji. And first of all, I would like to, give my special thanks to the entire KWAC team. And being a social cause, the way the team is helping the community, and understanding the cause, I really couldn't stop myself. I said, yes, I have to be there, sharing my experience, whatever, even a small part of it can be beneficial to the viewers, that will be great. So thanks a lot, Shyamji, and thanks a lot, Shivani-ji, for your time. And I would love to answer all the questions and try my best that I can resolve them here. But otherwise also, I will be sharing my number. If anyone has further questions, even after the event, they can get in touch with me. Okay, thank you. So Kamalji, as I mentioned this, Shivani-ji is today my co-host, and she is associated with the GTV and having vast experience in media. So Shivani-ji, over to you. You go ahead and proceed with the session. Thank you, Shyamji. Welcome, Kamalji. This is such a great pleasure to have you in the forum today. Honestly, I think I should say we have fortune today in our forum. Oh, that's too much. That's too much. There's nothing like that, No, actually, like you know what? Because the topic, this topic is so vast and this topic is so important. हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि यार, let's come out of the salary jobs, let's come out of this and let's go get into a business. But कितनी सारी चीजें होती हैं ना, they always give that pause, that that fear. अच्छा, वो first step कैसे ले? Taking that first step is important. So, and having you in this forum today, which is the person who's going to guide us today, that how to take that, first step forward and create a fortune for the family, especially because we are here for the families right now. Everybody's here for the families. But thank you so much for giving your time. So I'll start the questions. Won't bombard with the questions, but that's very, 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 very important questions that we have today in the forum. So the very first question, जो मेरे भी ज़हन में बहुत बार आता है, कि अगर मुझे business start करना है, तो क्या मैं कुछ अपना business शुरू करूं, or should I go for any kind of a franchisee? So would like to know more details about it, please. Thank you. Okay, that's a really amazing question, Shivani ji. And trust me, ये question अकेला जैसे आपने ये forum में नहीं, कई forums में ये पूछा जाता है. I would definitely like to answer in two ways. One, a lot depends on a kind of product or the services we are selecting or we are trying to get into. कुछ जगहों पे yes, franchisee is a very good option because फ्रेंचाइजर ने उसके ऊपर मेहनत की होती है, ब्रांड को बनाया होता है, तो आपका उतना टाइम बच जाता है. आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, वहां पे आपको सपोर्ट, सर्विसेज, ट्रेनिंग, सारा कुछ फ्रेंचाइजर प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड आप उसको आगे लेके जाते हैं वहां से. सो टेक्निकली यू स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज बीन ऑलरेडी समवन हैज वर्कड ऑन इट, रीइन्वेंटिंग द व्हील काइंड ऑफ अ स्टोरी. अब उसका दूसरा पार्ट है कि what can be the cons. Then the very first thing is कि कई बार
बिकॉज हम फ्रेंचाइजी के अंदर एग्रीमेंट में बाउंड होते हैं, there are certain limitations of that business, there are certain do's and don'ts. तो कभी कभी हमको हमारी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा रोक के रखना पड़ता है, बिकॉज देर आर सर्टन रूल्स विच आर ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. तो वहां पे आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर गेटिंग इनटू, एंड what is the nature of the business. Now, is the franchisor is going to help you reach that your goals fast, or can you do it on your own? Really fantastic. That's really fantastic. Thank you so much. So next question, and honestly, this is like a big question. Reason is, as per the records, 58% of population of Canada having pets at their home. So this question is, it's like a big industry. So the question from one of our viewers is, how can we have a pet food franchisee? And any suggestion to open a vet schools also? Okay. Yes, you rightly said, Shivani ji, the market size is huge. अगर मैं pet food market की बात करूं तो it is over 4 billion in Canada, and it is growing every year over 6%. That is some of the numbers. Now, if I have to talk about pets, there are over 28 million pets. Okay, so I mean, someone can understand what size of market we are talking about, and they definitely need nourishment, they need other helps, they need grooming. So the market is big. Now, deciding about the franchisee, yes, there are many key players which are already existing in the market. Now, if someone wants to start, definitely doing your own research, that is number one, which I tell it to everyone. Please, whenever you're getting into any sort of business, do your research. Does it complement with your skill set? It shouldn't be something कि जिसके लिए आपको पहले सीखना पड़ रहा है, फिर आपको टाइम देना पड़ रहा है. Then of course आप वो कर सकते हैं, but it is going to take little while. So that is it. Taking a franchisee of a pet food, I don't think so there is a big challenge. But again, as I said, in which market you are, आप किस market में रह रहे हैं, किस जगह हैं, वहाँ का market size क्या है, what is the total potential. Yes, ये कुछ questions हैं जो आपको पहले अपने लिए answer कर लेने चाहिए, then you get into that. And the process is very simple. You go to any of these websites, like the franchisor website, fill in their forms, and they immediately contact you. So that is simple. Now I come to the second part of the vet clinic, if I am not mistaken. That's what the question is. Yeah. Okay. I can give you. Vet clinics, yeah. Yeah, I can definitely tell you that it is another very, very big potential market, because there is right now, as per the some of the articles I read, there is a lot of scarcity for such clinics and such you can say such things in Canada, because as I said, the number of pets and the vets available, there is a big gap. Now, there is a certain requirements which are already led by the government of Canada, and one has to fulfill that as it goes to your past background, your qualification, your education, everything has to match. Then comes the next part where you can open. Yes, you can do it in another way also, if that is a possibility that someone can open a business and hire a veterinarian and other things. Yes, you can do that also. So there are do's and don'ts, but I would still suggest here going on the the Canadian website, and which promotes all these businesses, and taking more information from there. That's great. I think this answer that you just gave, I think we can see a lot of vet clinics now in the market for sure. That's a great thing. And this next question, Kamalji, normally आज की डेट में, because I'm also from the media background or from the electronic background, electronic media, आजकल social media is like on the top. बट होता क्या है दैट यू नो व्हाट, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट, हमें बीमार है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई लीगल हमें सजेशन चाहिए तो विल गो टू द लॉयर. बट व्हेन इट कम्स टू द सोशल मीडिया, व्हाई वी वांट टू गेट इनटू ऑफ आवर ओन टू सेटल डाउन और टू टेक केयर ऑफ आवर बिजनेस? क्या ये सही अप्रोच है? ये क्वेश्चन है हमारे व्यूअर का, कि उन्होंने एक बिजनेस ओपन किया लास्ट ईयर और उन्होंने खुद उसका सोशल मीडिया किया, कैंपेन्स एंड रन करना, एडवर्टाइज करना. सो maybe शायद उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, या what do you say on this please? Okay, I will say that जो आपने पहला पार्ट बोला कि हम लोग हर चीज के लिए एक्सपर्ट के पास जाते हैं, बट हम सोशल मीडिया में थोड़ा सा अपने आप को पीछे करके हम खुद करना चाहते हैं. वो इसका रीजन जो मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे रहते हैं पूरे टाइम.
तो क्या होता है कि हम फेसबुक पे भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम ट्विटर पे भी हैं या बाकी, तो हमको लगता है कि यस वी है ही क्या, करना ही क्या है, बस पोस्ट ही तो करना है। बट आई थिंक जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं या ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, दे विल एग्री टू दिस पार्ट, इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ, इट्स अ बिग साइंस इन इटसेल्फ, वेयर आपको डेमोग्राफी समझना, आपके प्रोडक्ट की कौन सा टारगेट ऑडियंस है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग देम। यस, इसके लिए एक आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सो देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, आई वोंट से दैट पीपल हु आर डूइंग इट कैन नॉट डू। यस, देर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट एंड दे आर डूइंग सक्सेसफुली, बट there is a small percentage of that. But most of the successful businesses, you name it, they go to the experts because they want to get the work done from an expert who, which is its strength, जो जिसकी कहते हैं ना, जो जिसकी खासियत है उससे हमको काम करवाना चाहिए। तो आपकी स्पीड एक उसमें जल्दी आती है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, अगर आप हमारे साथ अपने आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम कहते हैं ना, वो ठोकर खा के सीखेंगे, भाई हमने गलती की, अच्छा ये कैंपेन वर्कआउट नहीं हुआ। तो मेरा तो ये बहुत मानना है कि यस, गोइंग टू अ राइट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इज रियली रिक्वायर्ड। आप ठीक है अपना बजट रखें, आई अंडरस्टैंड, समटाइम्स पीपल से दैट हमारा बजट उतना नहीं है। आई कंप्लीटली एग्री टू दैट पार्ट। स्टार्ट करें थोड़े से बजट से, बट अगेन सीखें उसको, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप मीटिंग करें उनके साथ, हर महीने उनके साथ बैठें कि वेयर द थिंग्स आर गोइंग। सो उसमें से भी बहुत लर्निंग होती है। होता क्या है कि हम काम दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं, बोलते हैं कि भाई सब कुछ यही लोग करके देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट इज योर बिजनेस। मेरा ये बहुत मानना है, क्योंकि अब मैंने जब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरा ये बहुत बहुत स्ट्रांग मानना है, जो आप उसके अंदर कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स बीइंग योर ओन बिजनेस। तो आपको उस एजेंसी के साथ अगर आपने हायर किया है या किसी बंदे को हायर किया है, स्पेंडिंग टाइम विद देम एवरी मंथ, रिपोर्ट समझें, वेयर वी आर गोइंग, व्हाट आर द गुड कैंपेन्स, या फिर हम कैंपेन्स कैसे बना सकते हैं, इट इज अ रियली अ गुड रिक्वायरमेंट। तो मैं इसको एसी में ही यहाँ पे खत्म करूंगा कि यस, ट्राई टू लुक फॉर पीपल हु कैन डू द जॉब फॉर यू, सिट विद देम, रिव्यू द whatever is the results coming in, and if required make the changes, so that is the only answer I can give you right now. Fantastic. Thank you so much for clarifying all these points actually. And now over to my co-host, Shyamji. श्याम जी, आप शायद म्यूट पे हैं। Thank you, Shivani ji and Kamal ji. Kamal ji, I have next question. I think people are traveling from India and on open work permit, right, or closed work permit. So they wanted to know. This is not only one person question. This is, I think, most of the people want to know. So they are on work permit. Are they eligible for to do the business in Canada? If yes, what kind of franchises or business they can do here? ओके, Share श्याम your जी, thought. ये थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, पर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बिकॉज इट रिक्वायर एन एंगल ऑफ इमिग्रेशन रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से आंसर करता हूँ कि वो अगर ओपन वर्क परमिट पे हैं या क्लोज वर्क परमिट पे हैं, देर इज सर्टन रिक्वायरमेंट्स एंड देर आर सर्टन डूज एंड डोंट्स, जो कि आई थिंक वो अपने इमिग्रेशन लॉयर से या जो उनका कंसल्टेंट है उससे बात करें कि भाई मेरा ये वीजा है, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बिकॉज देखिए, अगर उनको करने की अनुमति या फिर दे आर अलाउड, तो फिर उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर। अगर उनको परमिशन दी है तो फिर आई थिंक दे कैन डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। अब वो फ्रेंचाइजी में भी जा सकते हैं, वो अपने छोटे बिजनेसेस भी बाय कर सकते हैं, वो ऐसे मार्केट्स में भी जा सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है एंड दे कैन बाय द बिजनेस, बिकॉज ये एक बड़ा कॉमन ट्रेंड चला हुआ है अभी। आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद मेनी ऑफ द क्लाइंट्स जो बोलते हैं कि सर मेरा बजट कम है एंड लुकिंग एट द ओंटारियो मार्केट दे आर नॉट एबल टू गेट और एस्टैब्लिश देयर बिजनेस। Then definitely we suggest them some different markets where on the same value they can buy the business, they can open and run the business successfully. At least they can meet their monthly requirements या जो needs हैं, bills पे हो जाते हैं शुरुआत में। कुछ जगहों पे these requirements are little high, तो depending on their budget also they have to see. Good. Thank you, Kamal ji. Kamal ji, there is one more question that is related to AI. We know that everyone talking nowadays AI, right? And people are using this AI technology to make their applications. So related to this technology, there is one question. One of my viewer asked. They've created one chatbot based on AI.
okay, they are struggling to find the client and how to sell that product in market. So can you please guide us on that? So ओके, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन एंड ये इसको मैं बोलूंगा ये आजकल का क्वेश्चन है, yeah, क्योंकि जो नया ट्रेंड चल रहा है इज ऑल अबाउट एआई, चैटबॉट्स एंड समथिंग व्हाट इज नेक्स्ट न्यू थिंग. So I think they have a great product, no doubt about that. Demand is humongous, and yes, उनका जो एक query है कि they are not able to reach the right target audience, or they are not able to reach the right client. क्योंकि मेरे को उनका अभी पीछे का कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है, but I can just understand and assume and can give you few answers. right. What about they prepared for this? What type of business? Right? Exactly. Because Right. then there are many factors which we have to ask and Right. before we give them some kind of a strategic answer. But Right. यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का क्या प्लान बनाया है. That's number one. Number two is what all platforms have they utilized या used to reach to their audience. Because देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे events होते हैं which are very much inclined towards display of these sort of businesses, और वहाँ पे आपको right set of clients भी walk in करते हैं और आप उनसे मिलते भी हैं. That's number one. ऐसे बहुत forums हैं जो ये सारे नए businesses को promote कर रहे हैं. So have they tried becoming a part of those forums? That's another thing to ask from them. And third is, who are the people who have tried their chatbot, or maybe they have done हम जिसको FMCG की लैंग्वेज में फ्री सैम्पलिंग बोलते हैं, बट टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने यूज किया है एंड दे विल से दिस इज फैंटास्टिक. नाउ दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी, आई वुड से, कि उनको एटलीस्ट कुछ लोगों को वो स्टार्ट करके देना चाहिए और फिर उनसे डिस्कशन करके पुट इट ऑन अ फोरम लाइक दिस और मे बी समवेयर एल्स, जहां पे वो लोग उसकी खासियत बता पाए. देखिए, एक तो होता है अपनी खुद तारीफ करना, एक होता है कि सामने वाला आपकी तारीफ करे. सो सेम गोज विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि आपका कुछ चीज अच्छी है, लेट अदर पर्सन टॉक अबाउट इट, एंड देन पीपल आर रियली मोर इंटरेस्टेड. सो right now I can only give you this answer, that they have to try some different mediums to market their product. Okay. Thank you, Kamalji, for giving the proper answer for this. So for the interest of the people, I'll let you know what is the AI. AI is the just you are mimicking a computer or system that can think of like a human being, and you can put some human intelligence algorithm into that, and they behave like that as a human. Kamalji, there is one last question, but not least. We have a lot of questions, but I will not take much time in this session. We'll post it those questions to your in description. So last question is, most of the people want to know if we are planning to start a business in Canada. Okay, so they wanted to know what is the government aid on that, or if they file the tax, what kind of benefit they can take it, or what kind of rebate they can take it in those businesses. Either they start with a small business or large business, sole propriety, corporation, those type of things. Okay. Over to you. Very good question, and this is a very basic question, I would say. And जो कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उनको ये रहता है कि भाई सबसे पहले कि मैं ये देखूं मेरे को कहाँ से हेल्प मिल सकती है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस, टू स्टार्ट एनी बिजनेस. अब इसमें मैं जो टेक्निकल पार्ट है वो आपको दूसरे तरीके से आंसर कर दूंगा, बिकॉज द टैक्सेशन आई एम रियली नॉट एक्सपर्ट एंड नॉट एन राइट पर्सन टू गाइड एनीथिंग टुवर्ड्स द टैक्सेशन साइड. What I can say is there are multiple rebate and grants program run by the government, and it is on the government website. So even if few people will type on Safari or Google that they're looking for grants and benefits or rebates for their small businesses, there is a site which is being promoted by Canadian government, and they can get everything. They just have to fill basic questions, और बहुत simple questions पूछे हुए उन्होंने कि भाई आपका size क्या है business का, आपका नेचर क्या है बिजनेस का, एंड देन एट द लास्ट यू गेट कपल ऑफ ऑप्शंस जो आपके लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो ग्रांट कह लें आप या आप उसमें लोन्स की बात कर लें. तो आई वुड से दैट इज वन वेरी गुड एंड स्मार्ट वे ऑफ एटलीस्ट गेटिंग सम इंफॉर्मेशन बिफोर यू गेट विद सर्टेन बैंक्स. यस, दे डू हेल्प यू फॉर business development loans. There are many banks that even if your product is really good, they will say that, okay, you come to us after say a couple of months, we may give you some line of credit or other things. So
आई थिंक यहाँ पे वही बात आती है जो मैं सबको बोलता हूँ कि एक रिसर्च ये है आपकी कैपिटल की रिसर्च जो आपको करनी बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। जैसे एक मार्केट की रिसर्च होती है, सेम इज योर वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि मेरे को कैपिटल कहाँ कहाँ से मिल सकता है। देयर इज समथिंग विच एवरीवन इज लुकिंग फॉर, रिबेट, देयर आर सर्टेन रिबेट्स, ग्रांट्स। आई थिंक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफी उन लोगों ने प्रमोट किया हुआ है, एंड देयर आर सर्टेन ग्रांट्स एंड थिंग्स। बट अगेन मैंने जैसे बोला कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई कैन ओनली सी दोज big headlines on those things and certain articles where the government is promoting. So I think someone who is planning for this should at least visit once the site. It takes 15-20 minutes, but आपको काफी information मिल जाती है, and then you can plan your further steps कि आपको किस direction में जाना है, आपको यहाँ से इतनी rebate मिल सकती है and all. Regarding tax filing, I think the CPAs and other people who are expert in that, they can answer that part of the question that कौन सा business incorporation उनके लिए अच्छा है, limited shareholding का, if there are partners, then what kind of partnerships they can go, what type of shares they can have, type A, type B. So there are many things, but I think the CPA is the right person who can answer these questions. And getting a right CPA is, yes, really very important. That kind of guidance is required when you're starting your business. Yeah, right. Because this is the taxation part, so people are more worried. Is there any benefit they will get, any relaxation they will get in the tax filing? Yeah, that they can reach out to CPA. Thank you, Kamalji. So Kamalji, we tried to take so I just wanted to know what can you share your views or thoughts, which area in business development, which is not covered in questions, which people have to focus when they are planning to take their business one level up, or they want to expand their business. So just share your views on this. Okay, श्याम जी, वैसे तो बोलूं ना, आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत छोटी सी चीज में मेरे से पूछ लिया है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो आई कैन टॉक फॉर आवर्स कि हमारे क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं बिजनेसेस के, या क्या हमको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो बिकॉज मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ, अच्छा आप ये बताओ आपको किस इंडस्ट्री के बारे में पूछना है, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री हैज देयर ओन डिफरेंट डूज एंड डोंट्स। बट अगेन, एक एज अ जनरल आई वुड लाइक टू आंसर एंड ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स जो आपने बोले हैं। देखिए, सबसे पहला है जो मैंने पहले भी बोला, सबसे पहला है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, आई थिंक it is going to be much more profitable and much more, I would say, fast producing, जो भी किसी की strength है, for example, कोई अगर is good in cooking, if he or she is a chef, probably they will go for the cooking side or the restaurant business or QSR, quick service restaurant, or yes, because उनको पता है कि ये मुझे मालूम है इसके अंदर क्या होता है, that's one side. Second is doing your research. Now this research is a big small word but a very big value. हमने कैसी रिसर्च की बात करनी है कि अगर किसी को कोई छोटी सी चीज खोलनी है तो फाइन, अगर एक चाहता है कोई मैं एक बिल्कुल सर्विस रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, टेक अवे करना चाहता हूँ, दैट्स गुड, you should, but doing a survey of your market where you want to start is really a requirement. कितने रेस्टोरेंट्स हैं उस कैटेगरी के, क्या आप यूनिक लेकर आ रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पोजीशन कर रहे हैं, what are your target audience, means are the college going students are your target audience, or the working class, or the people who are always on the go, just grab and go वाली situation. तो ये सारे रिसर्च करना, क्योंकि जैसे मैंने एक कैटेगरी की बात की, बहुत जरूरी है। ऐसे ही हर कैटेगरी की अपनी एक रिसर्च होती है जो कि हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आई एम प्रीटी श्योर की जानी चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतने एंथुजियास्टिक होते हैं कि फटाफट मिलते हैं, बात करते हैं, फ्रेंचाइजर से मिलते हैं, पेपर साइन कर देते हैं, बस जब वो एक बार साइन हो जाता है ना, ट्रस्ट में फिर आप न्यूट्रल रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपने पेपर साइन कर दिए। तो अब वो कहते हैं कि अब तो उसके अंदर घुस गए तो हमको अच्छी ही बात करनी है। So what my suggestion is, before anyone get into any kind of signing of papers, please do your research. Talk to the people who are running the similar business. Yes, आपके बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, इस तरीके से कि सामने वाला भी ऑफेंड ना हो और आपको शायद छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे। But doing your research is a very important part of starting any business. That's the second part. Third part, जो कि शिवानी जी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था regarding the social media.
सोशल मीडिया इज अ रियली बिग थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग, यू नो। तो आप अपने आप को कैसे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, अपनी सर्विसेज को कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट इज द मैसेज इन योर ब्रांड, व्हाट इज द मैसेज इन योर एडवर्टीजमेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नो। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अंदर यस वेरीज ऑन व्हाट इज योर बजट साइज, आप कैसे प्लान कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। आपको क्या सोशल मीडिया एक्सपर्ट चाहिए, बहुत बड़ी एजेंसी नहीं भी चाहिए, तो देयर आर मेनी फ्रीलांसर्स हु आर डूइंग इट। आप बैठे हैं, बात करें, बट हैविंग दैट पर्सन प्लानिंग योर सोशल मीडिया इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नो, क्योंकि वो एक चीज है जो आपको कम्युनिकेशन करके दूसरों तक पहुंचाएगी, यू नो। राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज starting your process, and your formulation of the process from day one is very important. आपका क्लाइंट डेटाबेस अगर है सिस्टम में होना चाहिए आपके पास, नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए आपको कैसे बनाना है, बिकॉज 1 ईयर या 2 ईयर डाउन द लाइन वो जो क्लाइंट डेटाबेस है जिन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज किया है, सर्विस इज अ गोल्ड माइन। पीपल फॉरगेट, एंड वो जब तक रियलाइज करते हैं तब तक वो साल जा चुका होता है, 2 साल जा चुके होते हैं, एंड दैट्स वेयर people like us, they come in picture, we sit with them, we tell them कि आप कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, how you can engage with your clients, which is a very important exercise। और ये एक्सरसाइज हर 3 से 4 महीने में करनी बहुत जरूरी है किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। So I believe, you know, these are few things, but as I said, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप मेरे को बोलते जाएंगे, I mean शाम हो जाएगी, I can talk to you. There are so many things needs to be done to run a successful business or to make a business successful. Yeah, thank you, Kamalji, for your precious advice to us. Kamalji, if someone want to reach you related to their particular business expansion, anything related to business, so how can they reach you? Can you please? Okay, so the very best and simple formula I have kept for everyone is my phone number. I am 24/7 accessible. Anyone can give me a call on 416-333-8747. I am available all 7 days because that's how I work and that's how I interact with my clients. If anyone has any query, they can reach out to me anytime. You can drop me a message or you can call me on that number. I will be really happy. If I am in my meeting, definitely I will call you after my meeting. So that's my number. I'll repeat my number: 416-333-8747. I'll mention this number, viewers, in Facebook comment and our YouTube channel description. So if anyone have any question related to their business, feel free to reach out to Kamalji. You have to take the utilize his experience in this field. He spent years in this field. Thank you, Kamalji, for your again precious time to us. And so this is our third episode for business that is completed now. And those viewers who joined us, thank you very much. We will have the upcoming sessions on different areas, and we try to bring those peoples in this platform, and we'll try to address our daily life questions, whatever we're facing in our daily life. Shivani ji, over to you. Thank you so much, Kamalji. As I started with a quote that today I think we can make our fortune with you. But thank you so much. Really looking forward to have more guidance from you for our viewers for sure. And honestly, looking forward to have one more session also with you. Because that's I am like always available, Shivani ji. Really, please. and I mean the cause, जिस cause के लिए आप लोग कर रहे हैं, श्याम जी and the entire KWAC team, it itself motivates us कि हाँ हमको contribute करना है ना, तो don't worry about that. आप मेरे को बोलेंगे 10 बार आना, I am available 10 times. Please feel free. It's honor to be here, you know. Thank you so much. Have a wonderful day ahead, and thank you so much to all our viewers, those who take out the time, especially on Sunday. So looking forward to have more guidance on this forum. Right. Thank so you, guys, Shivani ji. Thank you, Shivani ji. Thank you very much. Thank you very much. One last thing. Please feel free whenever we organize this such kind of sessions, please feel free to fill those forms we putting in advance, so your question will be addressed in the session. If not, we will offline we'll sort out those answers and we'll put in our description. Thank you very much. Thank you all. Have a nice day. Bye. Thank you everyone.